Hello, good evening and good morning, everyone. Om Shanti. Welcome. Om Shanti. Good morning and good evening. Love you. Om Shanti. Shanti. Hope everyone is doing well. तभी तक हम लास्ट कुछ सेशंस में बात कर रहे थे अपने बारे में। कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो हम खुद ही जी सकते हैं, कोई दूसरा हमारे लिए हमारी लाइफ नहीं जी सकता है। तो ये रियलाइजेशन कि क्या मैं सारा टाइम किसी और की लाइफ तो नहीं जी रहा हूँ, राइट? क्योंकि जो देह है, देह की बातें हैं, ये जैसे कि एक रोल है, कैरेक्टर है, और जो मैं आत्मा, मेरी लाइफ जो है आत्मिक कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, इसको हम कितना नेचुरल बनाते जाए। यही मेडिटेशन, स्पेशली राजयोग मेडिटेशन का फाउंडेशन है, सोल कॉन्शियसनेस। अभी हम कितने भी वर्षों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हो, हम डेली हर चीज करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं the barometer of our progress, or how can I measure my progress, is in this कि कितना जल्दी और कितना ज्यादा समय तक I can be in soul consciousness। तो हमारी ग्रोथ का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का आधार कहें या पैमाना कहें, सब कुछ यही है, सोल कॉन्शियसनेस। और देखा जाए तो बहुत सिंपल, सहज, इट्स वेरी इजी। अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में, अपने स्वधर्म में अनुभव करना। तो आईने में जो हम देखते हैं वो केवल एक छवि है, जो कि शरीर की छवि है, पर मैं आत्मा, कल हमने बात की कि भ्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा सितारे की तरह चमक रही हूँ। हम किसी को भी देखते हैं, बात करते हैं, तो ये रिमाइंडर कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया मेडिटेशन तो लगता था हाँ समझ तो आ गया, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। पर इतने सालों बाद भी, पर ये जो, क्योंकि एवरीथिंग, दिस इज द फाउंडेशन, तो इसीलिए अपने आप से हमेशा ये बात करना ताकि वो पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर हो, पक्का हो। क्योंकि हम रह रहे हैं इस देह की दुनिया में, शरीर की दुनिया में, हम रह रहे हैं रोल वर्ल्ड में। तो इसीलिए हम सोल को भी रोल की आंखों से कई बार देखना शुरू करते हैं। हम कहते हैं हाँ आत्मा है, लेकिन ये अनुभव कि मैं वो आत्मा हूं, मेटाफिजिकल बीइंग, जो कि इस शरीर में, जो शरीर को चला रही हूं, मैं एक्टर हूं, इसकी गहराई हम कितनी अपने जीवन में धारण करें, बढ़ाएं। तो हम 2 मिनट इसका अनुभव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो राइट नाउ अभी हम अपना अटेंशन लेकर आए अपने अंदर की दुनिया में। जैसे हम अपने घर में एंटर करते हैं तो एंटर करते साथ ही दरवाजा भी अंदर से बंद करते हैं, वैसे ही मैं अपने अंदर की दुनिया में एंटर करते करते
बाहर की दुनिया का दरवाजा कुछ समय के लिए बंद. No other thoughts allowed. Just I, the soul, a point of light. मुझ आत्मा का अस्तित्व इस दुनिया से परे है. मुझ आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, निरंतर है, इटर्नल है. And I realize that my truth is this. सत्य. मैं आत्मा सत्य हूं, नित्य हूं, ज्योति स्वरूप हूं. इस शरीर से पहले भी मैं आत्मा थी और इस शरीर के बाद भी रहूंगी. शरीर मुझ आत्मा को बाइंड करके नहीं रख सकता है. और मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही है शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद. और मैं आत्मा फिर से अपने शरीर में वापस आती है. मेडिकल फील्ड में कई डॉक्टर्स ने रिसर्च की है आत्मा के ऊपर. और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और कई रिसर्चेस हुई हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी. नियर डेथ एक्सपीरियंस जहाँ की जो पेशेंट्स हैं दे वर डिक्लेयर्ड मेडिकली डेड, पर कुछ समय बाद दे केम बैक इनटू कॉन्शियसनेस. और उन्होंने बताया कि कैसे वो शरीर से एकदम अलग थे. वो हर चीज देख पा रहे थे, वो देख पा रहे थे और सबके विचारों को भी समझ पा रहे थे. पर फिर उन्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव हुआ, जैसे एक प्रकाश, एक लाइट. इतना हल्का लगने लगा, इतना प्यार का अनुभव होने लगा. और फिर शायद से उनका धरती पर रोल खत्म नहीं हुआ था, तो वापस वो आए अपना पार्ट बजाने के लिए. तो आज के डिस्कशन का हम शुरुआत करते एक छोटे से वीडियो से. और ये वीडियो है, इट्स अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सनालिटी. हर नेम इज अनीता मूरजानी. उन्होंने अपने लाइफ में ये नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव किया. तो उनका शरीर एकदम जैसे कि बहुत ही वीक हो गया था. सारे ऑर्गन्स कोई काम नहीं करते थे. और उनको जब ये अनुभव हुआ शरीर से अलग होने का, आत्मा का, और फिर वो जब शरीर में आए तो जैसे ना उनका बहुत सारे कैंसर एक साथ थे, ट्यूमर्स. पर वो अनुभव के बाद जैसे वो शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और उनका लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो भी एकदम चेंज हो गया. तो हम थोड़ी देर वो वीडियो देखते हैं. ऐसे तो इंग्लिश में है, बट इट्स वेरी सिंपल इंग्लिश. तो उसमें उनका थोड़ा सा इंटरव्यू है. इज दैट ओके? हम थोड़ा देखना चाहेंगे. हाँ जी सर भाई. But a woman in Hong Kong whose name is Anita Moorjani. She's an author, a Hay House author now. She's written a book, a powerful book. And I read this story about Anita. And it seems that on the 2nd of February,
in the year 2006, this woman was wheeled into a hospital in Hong Kong. She had been sick for 5 years. Her organs had all shut down. Her family was gathered at the emergency room. Her husband, who is here tonight, I'm honored to have met, beautiful man named Danny. And the doctors had told her family and her husband that these were her last hours. She was down to 86 or 88 pounds. Anita emerged from her coma, some 30 hours in a coma. And she has a story to tell that is so compelling. And she's here from Hong Kong to share with you some of the lessons that she learned while she was in this comatose state and what she came back to teach us. She's one of the most beautiful human beings I've ever been privileged to know and honored to support and write a foreword for her book. And she's here with us today, and I'd love you to meet her. Anita Moorjani, please, come on. Be seated. Thank you. Hi, good evening, everyone. Tell us, Anita, you're in a coma, your husband is whispering in your ear, your mother is there, your brother's on his way to see you, everybody's waiting for you to take your last breath. What were you observing, and what did you learn, and what did you come back to teach us? Wow, there's so much there. Even though I was in a coma, I was actually aware of everything that was happening around me. I'm sorry, I still get emotional when I think of that state. It was 5 years ago, but I still remember it as if it was yesterday. I was in a coma, but I was aware of everything the doctors were doing. I was aware of my husband. My mother was crying. She was, because the doctors had told them that I only had a few more hours to live. My organs had shut down, and these were my last hours. And I wanted to assure them that I was feeling fine, that I was feeling great, but I couldn't. I couldn't understand why I couldn't communicate with them. And each time it felt as though I was getting involved in the drama, and my emotions were being pulled towards feeling for my mother and my brother. At the same time, it was as though I was being pulled away. And it was as though my energy or my awareness or consciousness was just expanding. And it was just expanding and expanding and just getting bigger and bigger. And it felt as though I could feel what everybody was feeling. I could feel what my husband was feeling, what my mother was feeling, and the doctors as they were running around trying to save my life. And then I became aware of what I can only describe as unconditional love. It was as though I was just surrounded or embraced by this unconditional love. And when I say unconditional, I mean really unconditional. It was like I didn't have to do anything to prove myself or to be anything, or I was loved unconditionally regardless. It was as though even things that I could have perceived to have done wrong in my life, it wasn't as though I was being judged. There was no judgment whatsoever. There was only compassion. It was like compassion, and it was like I understood in that state why I would do whatever I did in life. It was, everything I did was out of the limitation of being in a physical body. So you were looking at your body, and you were given a choice, is that right, whether to get back into this sick body? That's right. Or not, and what did you do? I became aware of the presence of my father. He had passed away 10 years before me.
And I also became aware of my best friend who had passed away 2 years before, and I had missed her desperately because she was like a sister to me. Did you feel when you were in that near-death experience state, in that coma, watching it, that coming back also meant that you had something to teach everyone? And what was it that you felt you had to teach them? I felt that I had to come back because there was a greater purpose. Because at first, I didn't want to come back into my body because my body was so sick. And there was just so much unconditional love on that side. It's really, really hard to leave. So if anybody has lost anyone, I can completely understand why they would stay there. But also, I seem to get the message. I seem to understand that it wasn't my time, and I had a mission. I had a purpose, and I had not yet fulfilled. And I seemed to understand that even in order to fulfill my purpose, I wouldn't have to really go and figure it out, or I wouldn't have to pursue anything. I would just have to go back and live fearlessly and just not be afraid to be myself. And that's all I had to do. I also sensed that my husband and I still had a purpose to fulfill. My husband he's truly my soulmate because he was there talking to me all the way through, talking in my ear and holding my hand, and I was aware of that. You learned some very important things. Yes. Was it like just about being positive, to be a positive thinker? Was that... No, in fact, being positive is not enough. I used to always be positive because I was a people pleaser. I used to always stay positive because I never wanted to bother anyone or trouble anyone. I learned that more important than being positive is being yourself. I learned that that's actually the most important thing, is to be yourself. Because that's why we're here. We're here because we're facets of one. It was as though we are all one. Without my body, it felt as though I was connected to everyone and everything. Was fear a big part of your life and had something to do with being ill? Your being sick? Yes, fear was a big part of my life before I was sick. I used to live a life in fear of not being good enough, fear of everything, fear of illness, fear of not meeting other people's expectations. But my near-death experience taught me that there's nothing to fear. In fact, when I was given the choice, I felt I reached a point where I had the choice of whether to come back or not. And it was my father and my best friend who actually said, now that you know who you truly are, go back and live your life fearlessly. And have you been doing that? Yes, I have. Ladies and gentlemen, Anita Moorjani. जैसे उन्होंने बताया कि जब उन्हें आत्मा का अनुभव हुआ, तो जैसे उनका पर्सपेक्टिव ही पूरे लाइफ का बदल गया। और उन्होंने पूछा कि क्या आप मैसेज क्या है, क्या सकारात्मक चिंतन करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। उन्होंने कहा, more than being positive, it's important to be myself. To be myself. I am the one I have been waiting for. अपने आप के साथ जीना. So this is called soul consciousness. भी soul consciousness भी यही है कि अपने truth में जीना. मैं जो हूँ, अपनी original स्वरूप में रहना. तो आज हम थोड़ा इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस. हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस वर्सेस बॉडी कॉन्शियसनेस. यानी ये कॉन्शियसनेस कि मैं आत्मा हूं या ये कि मैं शरीर या रोल हूं. तो ऑन द लेफ्ट साइड अगर हम देखें बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो, इंफीरियोरिटी, लो सेल्फ एस्टीम, या तो एरोगेंस आएगी कि मैं बहुत
मैं ये हूं, या फिर लो सेल्फ एस्टीम आती है कई बार। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में पॉजिटिव सेल्फ इमेज, हमारा सत्य स्वरूप हमारे साथ हमेशा रहता है। ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्चा ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी हम अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई वीकनेसेस है पर कोई बात नहीं, उसके बियॉन्ड हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। वीकनेसेस है भी तो कोई बात नहीं, पर आई एम अ प्योर सोल। तो कॉन्फिडेंस आता है और अपने से प्यार हो जाता है। यह है सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में लैक ऑफ कंट्रोल ओवर सेंसेस, कंपल्शंस एंड एडिक्शंस ये होने लगते हैं। हमारा कंट्रोल नहीं रहता अपने शरीर के कर्मेंद्रियों पर या अपने थॉट्स के ऊपर। और सोल कॉन्शियसनेस में सेल्फ मास्टरी, यू रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड ट्रीट इट वेल। तो हम सोल कॉन्शियसनेस में एक्चुअली हम शरीर का और अच्छी तरह से ध्यान भी रखते हैं। क्योंकि देन जैसे एक कोई गिटार बजाने वाला है, तो गिटार बजाने वाला अपने गिटार का कितना ख्याल रखता है, पियानो बजाने वाला अपने पियानो का कितना ख्याल रखता है। उसी तरह से हमें फिर ये पता है कि शरीर हमारा माध्यम है जिससे हम आत्माएं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर शरीर का भी हम ख्याल रखना शुरू करते हैं। मतलब शरीर हमें केवल एक हैप्पीनेस या प्लेजर के अनुभव के लिए नहीं, पर हम शरीर को भी जैसे सर्व कर रहे हैं, शरीर का ख्याल रख रहे हैं। Prejudice, stereotyping, making comparisons, judging others, कई बार हमारे ये थॉट्स चलते हैं, हम लेबल करते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, कई बार होता है। और उसमें ही हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है, एक दूसरे को जज करना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें लग रहा है कि ये कोई भी थॉट्स में हम जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ही है कि हम रोल कॉन्शियसनेस में है। इसका अर्थ है हमें फिर शिफ्ट करना है सोल कॉन्शियसनेस। हम सभी आत्माएं हैं, सभी शांत स्वरूप हैं, और हमारे सारे संबंध आपस में, हम सभी भाई भाई हैं। तो इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स में हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। एक्सपेक्टेशन कब होती है? एक्सपेक्टेशन होती है व्हेन आई नीड समथिंग। जब मुझे लगता है मुझे कुछ चाहिए, तभी एक्सपेक्टेशन होती है। पर मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आत्मा अपने आप का जब अनुभव करने लगती हूँ तो अपने आप को फुल महसूस करते हैं। तो कुछ चाहिए नहीं तो एक्सपेक्टेशंस भी कम होने लगती हैं। तो संबंध बहुत सुंदर हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में हैप्पीनेस डजंट लास्ट, यानी हैप्पीनेस होगी भी तो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर। तो एक डिजायर फुलफिल हुई तो थोड़ी हैप्पीनेस मिली, पर फिर दूसरी डिजायर आएगी, फिर उसको फुलफिल करेंगे, फिर थोड़ी होगी, नहीं, टेम्पररी। sorrow results from unfulfilled desires। इसीलिए कहते हैं ना, मन जैसे एक बंदर होता है, मंकी माइंड कई बार कहते हैं। बंदर क्या करता है? बंदर को अगर हम देखें तो उसका अटेंशन एक तरफ नहीं होता है, वो एक सेकेंड फिर एक सेकेंड, मतलब वो शिफ्ट होता जाता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस या रोल कॉन्शियसनेस में हमारा मन भी ऐसे ही हो जाता है, भटकता रहता है। ये डिजायर, कोई और डिजायर, फिर कोई और डिजायर, फिर हमें लगता है कि उसको फुलफिल करना ही हमारी लाइफ का मकसद है। तो ये है बॉडी कॉन्शियस अप्रोच। सोल कॉन्शियस में इनर हैप्पीनेस, नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन। जो हैप्पीनेस देन बिकम्स अ स्टेट ऑफ माइंड। बॉडी कॉन्शियसनेस में अफ्रेड ऑफ डेथ, खुद की भी डेथ या किसी और की डेथ का भय होता है। और सोल कॉन्शियसनेस में भय नहीं होता है, ना डेथ का ना ही फ्यूचर का।
The soul consciousness easily allows me to live in the moment, live in the present. तो जैसे ये बीज है, सोल कॉन्शियसनेस भी एक बीज है और बॉडी कॉन्शियसनेस भी एक बीज है, और इस बीज से ही हमारा पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस हम अनुभव करते हैं। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाना कि मैं आत्मा हूं, और हर एक को आत्मिक रूप में ही देखना, और आत्मा देखकर ही उनसे संबंध संपर्क में आना। कहते दिस इज यू, अ प्रेशियस पॉइंट ऑफ कॉन्शियस ब्लिसफुल लाइट एनर्जी, दिस इज यू, ये हम हैं। Imagine a tiny point located where thoughts come from. That point thinks, remembers, and decides. This point is you. The point where every emotion is born. This is you. यहाँ सारी भावनाएं भी उत्पन्न हो रही है. A spiritual being interacting through the body. This is you. The eternal source of life and life's experiences. The seat of self-esteem and self-respect. This is it. अपने आप को इस अनुभव में बार बार लेकर आ कि मैं आत्मा हूं। तो होमवर्क, तो हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ होमवर्क भी करना चाहिए। तो क्या होमवर्क करेंगे? तो होमवर्क है, whenever you see yourself in the mirror, remind yourself that you are a soul, a point of light. तो हम दिन में कितनी बार शीशा मिरर में अपने आप को देखते हैं? आजकल तो फिर ड्राइविंग करते टाइम भी हम रियर विंडो देखते हैं, रियर मिरर में चेक करते हैं। ऐसे भी कितनी बार, तो जितनी बार भी देखें तो ये आदत बना ले कि जो हम देख रहे हैं वो शरीर है। क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है, जब हम कर्म में आते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं। इसीलिए कुछ एक ऐसी बातें जिससे कि हम बार बार इस अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग बनावें। तो आईने में देखते हैं तो याद करें कि मैं एक आत्मा हूं, और दिन भर टेक अ मोमेंट एवरी आवर टू स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर योर थॉट्स। ऐसे तो काफी हम सभी करते भी हैं, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, पर बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल कर अपने थॉट्स को क्लीन करें, सोल कॉन्शियसनेस के लिए। Remind yourself that all the people you come in contact with are pure and peaceful souls. See only their qualities. सभी की अच्छाइयों को देखें। तो आत्मा समझने से अपने आप वो अच्छाइयों की तरफ हमारा विजन जाता है। और हम और क्या करें? ऐसे तो हम थोड़े समय से जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम तो करते भी होंगे, लेकिन और भी हम थोड़ा ध्यान करें कि घर में एक मेडिटेशन का कोना रखें। छोटा सा कोना हो या कमरा हो, जो भी हो, पर एक मेडिटेशन प्लेस होने से हम वहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हो, क्लीन हो, जहाँ कि हम सोल कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशंस क्रिएट करें। वहां जाते ही ये अनुभव हो कि हाँ, मैं एक आत्मा हूं। और उसमें फिजिकल स्पेस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे तो सभी के घरों में मंदिर होते हैं या अलग अलग पूजा करते हैं, लेकिन इसका भी एक कोना हो जहां हम जाकर बस अपने आप से बातें कर सकें। रेगुलरिटी once or twice a day, दिन में एक बार या 2 बार। रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो दिन में 1-2 बार हम अपने आप को उस स्पेस में ले जाएं, थोड़ा अनुभव करें। फॉर्मूला फॉर सक्सेस, रिजल्ट्स इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस। हमें अनुभव कब होगा? सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल कैसे होगी? तो एक है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, और फिर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी उसका अभ्यास।
तो दोनों चाहिए। केवल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस नहीं है, तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। केवल प्रैक्टिस से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो दोनों चाहिए, एंड बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो मैं आत्मा हूं, इसकी समझ भी हो, और बार बार यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। शांति। तो ये हमने पिछले कुछ सेशन से अपने बारे में जाना, अपने स्वरूप को जाना, थॉट्स क्या है ये जाना, कैसे थॉट्स को चेंज करना है, और सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को रखना है, समझा। तो हम आगे और बढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम कल जब मिलेंगे तो हम और देखेंगे कि हम जो आत्माएं हैं कैसे शरीर से जो कर्म करते हैं, तो हमारे 3 फैकल्टीज क्या है, कैसे हम उनके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, और अपने बारे में और गहराई से और समझेंगे। शांति। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस और भी हैं, जिसे हम एक तो कहते हैं रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और जितना हम वो भी समझते हैं कि हाँ रीइंकार्नेशन, और साइंस में भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिससे आत्मा का अस्तित्व एकदम क्लियर होता है, और उससे ये हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाँ हम आत्माएं हैं। तो हम एक और वीडियो देखते हैं, अगर सबके पास टाइम हो। तो ये वीडियो है, इट्स अबाउट रीइंकार्नेशन, कि कैसे जो रीइंकार्नेशन है, यानी कई बार बच्चों को याद आता है कि हम पिछले जन्म में ये थे, और फिर हमने शरीर बदला, और कैसे हम इस जन्म में आए। तो ये भी बहुत अच्छे इसके अंदर। तो we will play one such video. जब तक होता है, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर तब तक हम 2 मिनट फिर से साइलेंस में बैठकर तब तक कोई कुछ शेयर करे, तब तक वीडियो भी हम डाउनलोड करते हैं। फिर से हम अपने असली स्वरूप में, मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, और सोल कॉन्शियसनेस मेरा नेचुरल नेचर है।
बार बार मैं अपने आप को इस स्मृति में स्थित करता हूं और इसी स्मृति से मेरे सारे संबंध, सारे कार्य, everything is filled with that clarity, with that purity, with that dignity. Om Shanti. Thank you everyone for your time and presence. Like to open up? कोई कुछ शेयर करना चाहे? Feel free to share. Om Shanti. ओम शांति सौरभ भाई, बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो रही है सोल कॉन्शियसनेस की और सभी को बहुत लाभ मिल रहा है। हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है सभी के लिए अच्छा लगता होगा। अभी हम लोग बाबा के घर में जाने के लिए ऑन द वे हैं। ओम शांति। वेरी नाइस। Thank you. Om Shanti. ओम शांति। आप लोग भी सब शेयर करेंगे। ओम शांति। म्यूट तो करो। शांति सौरभ भाई। ओम शांति अजय। सौरभ भाई, एक्चुअली पता नहीं हिंदी में कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है, शायद हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो सोल कॉन्शियसनेस को हम लोग देही अभिमानी क्यों बोलते हैं, आत्म अभिमानी क्यों नहीं बोलते? वेरी नाइस। और ये जैसे दोनों शब्द हैं, कई बार हम सुनते हैं आत्माभिमानी, कई बार कहते हैं देही अभिमानी। ऐसे सेंस तो दोनों का यही है कि इस रियलिटी में स्थित होना कि हम आत्मा है। तो इसमें हम कहते हैं आत्माभिमानी, यानी अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझना। जैसे हम बैठ रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में हम स्थित करते हैं। पर जब हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करते करते हम कर्म से डिटैच होकर तो केवल अपने आप को आत्मा देखें तो कर्म कैसे करेंगे? जैसे हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या हम कुछ खेल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उस टाइम ये याद रखना है कि मैं देही यानी द सोल हु इज मेकिंग द बॉडी मूव। तो आई एम द ऑब्जर्वर हु इज मेकिंग द बॉडी मूव। तो इसके हम कहते हैं देही अभिमान। देह नहीं पर देही, यानी देह को चलाने वाला। जी, थैंक यू सौरभ भाई। बट वेरी नाइस क्वेश्चन। Yeah. इसके बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं। कई बार हम सुनते हैं अशरीरी, कई बार सुनते हैं विदेही, राइट? तो ऑल दीज वर्ड्स हैव अ लिटिल मेन सेंस तो वही है, पर लिटिल डिफरेंस, लिटिल सटलिटी टू ईच। Any other thoughts? ओम शांति भाई जी, थैंक यू हमारे लिए भी होमवर्क देने के लिए, क्योंकि यही हमारा पहला और अंतिम होमवर्क भी है, पाठ भी है, प्रैक्टिस भी है। तो सोल कॉन्शियसनेस बनने के लिए और अपने को आत्मा समझाने के लिए तो याद और दिलाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। बिंदु बहन के लिए सबसे आसान है ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि उनका नाम ही बिंदु है, राइट? राइट, बोलना आसान है। थैंक यू।
अच्छा, ये वीडियो भी आया है, तो हम 2 मिनट ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Tia says that when her daughter Leah was 2 years old, she talked with amazing clarity about how she had died underwater. Is that true? Yeah, it is. We were driving in the car. She was in the back seat, in her car seat. How old is she now? She's 5. She'll be 6 Friday. Okay. So we're driving in the car, and she says, "Mommy, this is just like where I died." Like, real excited, not upset or anything, just kind of very matter of fact. At 2 years old? Yeah, she was about 2 3/4. So then you say, honey, you didn't die. I said, well, Leah, what are you talking about? She goes, she says, I was in my car and it fell off the bridge in the water and I died. And so I pulled off the road because I was a little stressed. And she said, and I said, well, where was Mama? And she said, you weren't with me that time. Which This is what your 2-year-old said. Yeah, she did. That got the exclamation points going. And I said, well, who was driving the car then? And she said, I was big. I could reach the pedals. And she has no clue that you need pedals to drive a car. She's 2. She's in the car seat. You know, there's like no way she could know that. And I said, well, what happened? And she described, she said, well, I wasn't wearing a seatbelt. And she is absolutely a fanatic about seatbelts. Everyone in our presence that knows us, she is going to make sure they have a seatbelt on. She will not get in the car without one, and neither will anyone else. And she said, well, I didn't have my seatbelt on, and I fell out of the car. And she said, and she put her hand up on her, and she said, Mommy, I was laying on the rocks. I could feel the rocks on my head. And she said, and see the shiny bridge, and she points up, she's looking up, and she says, see the shiny bridge and the bubbles going up. She could see the bubbles. Now, she has she has never seen television at that point in her life at all. And how would she have any knowledge of bubbles rising? You know, she doesn't swim, she doesn't put her face in the water. And she said, I could see the bubbles going up and see the sun on the bridge through the water. This is what your 2-year-old told you? Yeah. Hi, YouTuber. इसमें दिखाया कैसे 2 साल की एक बच्ची और उसको याद आया कि हाँ, कहीं से जा रहे थे, उसने कहा हाँ, यहाँ मैंने शरीर छोड़ा था, और उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि मैंने ऐसे शरीर छोड़ा था। Other thoughts? ऐसे हमारे तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो एक और वीडियो है जो डॉक्टर्स and how medically they have researched on it कि हाँ consciousness कैसे it continues और कैसे आत्मा ही शरीर को चलाती है। तो ये हम थोड़ा देखते हैं। So what happens when we die? It's a question that humanity has wrestled with throughout history. But a new study conducted by NYU may have found some answers. Dr. Sam Parnia is the director of critical care and resuscitation research at NYU Langone School of Medicine, where he ran this study. Thank you so much for joining us, Dr. Parnia. Pleasure. Thank you for having me. What would you say, what actually happens when you're clinically dead? You know, when people die, essentially it's when the heart stops. So this has been going on for as far as we know, millennia, not longer. And when the heart stops, you stop breathing and your brain shuts down, and that's how we declare people dead. And that's why we give a time of death and we give them a note. And really, to be honest with you, until about 50 years ago, that was the point of death. So people become lifeless, motionless, the brain shuts down. But now through advances in medicine, we can actually bring people back to life, even after they've gone beyond that threshold of death, and study what happens to them. And one of the interesting things, of course, is that the brain completely shuts down, as I said. But what's fascinating is that the cells inside the body, and particularly the cells inside the brain, do not suddenly become annihilated. They go through a process of decay that can take a few hours, which is why we can actually medically bring people back to life after they have technically gone beyond that threshold of death for tens of minutes, if not hours of time afterwards. And that, of course, raises many interesting questions about what happens when we die. So tell me more about this study. How did you conduct it? And tell me about, how you came about reaching your findings, your conclusion. I'm an intensive care doctor, so my job is to essentially save people's lives and prevent them from dying.
But unfortunately, people do die, and we try to revive them. What we have found is that over the last few decades, many millions of people have now come back, and many of them have reported, actually, anecdotally, that they've been able to see and hear things going on, even though from our perspective, they should have been dead and their brain should not be functioning at all. And so we became intrigued to study this, one, because it was fascinating, and two, because we tried to revive people without brain damage and to ensure they don't have any disorders of consciousness, so not becoming like brain damaged or having a vegetative state. At any rate, so this particular study is the largest study ever carried out in the world. It was done in 15 medical centers across the US and in Europe. And we studied more than 2,000 people who'd gone through this cardiac arrest or process of death. And we did not expect people to have any consciousness or awareness. But intriguingly, up to 40% of people came back and had a perception of being aware of what was happening to them, even though they had technically gone beyond the threshold of death. Why do you think that is? Well, there's a lot to it. I should also add that among that group, 10% had a very deep, profound mystical experience that was very true to them. But interestingly, 2% actually had full awareness, could describe all the events that were going on that were validated. So of course the question is, why does that happen? And we don't have the answers, because to our scientific model, when people have died, there should be no more conscious awareness going on. But it sounds like maybe consciousness is able to continue. And by that, I don't mean that they're awake, but that entity that makes us who we are, makes Sam who he is, makes Rena who she is, the self, the mind, seems to continue and doesn't become annihilated after a person has gone through their process of death. Were there any of the people that you studied that completely lost all consciousness? Well, that's what I was trying to explain. Yeah. Everybody loses consciousness immediately as soon as the heart stops. It's not like they're awake and watching us. Well, you mentioned that there were some people who remembered there was some sort of mystical experience that they were going Right. through. Were there some people who said, nope, didn't feel anything, didn't? So some people don't have any recollections. What we don't know is whether they had experiences and forgot it afterwards, and that may be what's happening. Because of course we forget a lot of things, and most of the people who are brought back have issues to do with their treatments. We give them sedative drugs, which wipes out their memories. So that's part of what we're studying now, is does everybody have this experience? And how long does mind and consciousness continue in some format, even though we've gone beyond the threshold of death? Do you have some sort of conclusion as to how far the mind and consciousness goes? Again, from what we can determine, which Yeah. is actually fascinating, and it raises questions about our whole science, about what happens when we die, is that it appears that even though people have gone beyond that threshold of death and their brain has shut down, that entity that we call consciousness, the mind, the psyche, whatever you want to call it, does not seem to become annihilated. From the evidence we have, that at least tens of minutes, if not hours of time afterwards, how long beyond that, we don't know at this point. For the folks who have lost consciousness and come back, have there been any long-term effects afterwards? Well, those people who have these very deep, profound, mystical experiences, often they describe a sensation of being very peaceful, seeing a bright, warm, welcoming light, sometimes deceased relatives. And intriguingly, some of them describe a sensation of a being that they describe as being perfect and full of light and love and compassion. Those who have that experience are often very positively transformed for the rest of their lives. It's very profound, it's Really? real to them. They become less afraid of death. They lose their fear of death completely. They engage in altruism. They're more helpful to people. They engage more with family. It completely changes them. So there's something very profound about this experience that they have. We often hear people say, I saw the light, some sort of light. Why do you think it is that some people see that and some people don't? Well, so there are two possibilities. One is that, as you said, only some people see it, and we think that, you know, it might be 10%. But the alternative is that everyone sees it. But unfortunately, because of the medical treatments that they get afterwards in the intensive care unit by doctors such as myself, to save their brain, they forget it. And one of our new studies is trying to actually decipher whether people have had it but just forgotten about it. And so I think there is some evidence that more people are having it, but unfortunately they just forget it afterwards. It's a fascinating study and a fascinating look into death and those final moments as well and returning back. Dr. Sam Parnia, thank you so much for joining us. Thank you. Pleasure to be here. Thank you. Did you enjoy the video? Yeah, very interesting and thought-provoking. That's what Baba talks about, being light, and Baba also as light, So science is proving that
Exactly, and that's what goes to show कि जो हम योग कर रहे हैं, it's reality, it's truth. It's not just a practice, it's not just imagination, but that's the truth of life. हम जब योग में परमात्मा का भी अनुभव करते हैं as a point of light, परमात्मा से प्यार का अनुभव करते हैं, तो रियल है, बहुत रियल है, एक्चुअल में वो हो रहा है, ऐसे नहीं कि हम बस सोच रहे हैं। इसके ऊपर 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो कभी टाइम होगा तो वी विल वॉच टुगेदर। एक है द साइंस ऑफ द सोल और एक है हु आर वी। ये दोनों जैसे compilation of different experiments and experiences that make us realize that we are souls. अगर सबके पास टाइम हो तो कभी हम देख सकते हैं। हाँ जी सौरभ भाई। Om Shanti Sarabhai. So in this video, the doctor said whoever had mystical experience, looks like those who had like soul consciousness experience, they change their life after coming back to their life, change their life very positively. They become altruistic, they do good things. So it looks like they had the soul consciousness, real soul consciousness experience, and also the peaceful and then love, light, maybe from God. Once they experience, their soul heal, and they, when they come back to life, they start doing good, has a positive impact. Maybe that's the soul consciousness that soul has experienced. Yeah, absolutely. Thank you. Yeah, beautiful video. Absolutely. Any other thoughts? ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति राजेश भाई। मुझे ऐसे ही थॉट आता है कि ये कारवां ऐसे ही चलते रहना चाहिए, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के साथ में, ताकि ये सोल कॉन्शियसनेस का जो पार्ट बाबा कहते हैं पक्का अभी तक नहीं हुआ है, कितना भी हम आगे बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही पक्का होगा ये पुरुषार्थ से, अलग अलग वे से जो आप कर रहे हो, अभ्यास करा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और सभी के लिए अच्छा होगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं लेकिन पहला पार्टी पक्का नहीं होता है ना, ये सभी के साथ है। मेरे भी यही ओपिनियन है कि जैसे संडे का वर्कशॉप था और ये फाउंडेड कोर्स हो रहा है, तो वो हमें भी बार बार याद दिलाती है कि हम आत्मा हैं। रोल में भी आते हैं पर बार बार याद आता है कि हम आत्मा हैं। सो बहुत हेल्प कर रहे हैं, राइट ना। ऐसे सनीता बहन बाबा रोज कहते हैं आत्मा समझो, मुझे याद करो, लेकिन वो पॉइंट तक रह जाता है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो उतना ऑल टाइम याद नहीं रहता। जी। तो वो जब हमारा ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पार्ट पक्का हो गया, तो वो फिर कोई भी हमारे पास ऊपर का जो आ जाता है वो फिर नहीं आएगा कुछ भी, तो आप स्मूथली सब आगे बढ़ते रहेंगे। वो कई बारी परिस्थिति भी ऐसी आती है तो फिर एकदम याद आ जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ। Right, yeah. I also feel the same, Rajesh man. So I feel like soul consciousness is the main important thing. Everything comes down to soul consciousness. Once we are Atma Abhimani, then we can connect to divine Paramatma, and we can, everything will be, whatever gyan we are getting, it will fall in place. So soul consciousness is the main. Sarabhai, Om Shanti. I think I have to congratulate you because आप जो भी चीज बोलते हो बहुत ही फैक्ट बेस्ड होती है,
and evidence based होती है. In this day and age of science and everything else, sometimes जो कई बार बोला जाता है कि आप अपना point of light सोचो and you know all that, उसको believe करना एक तो thought है कि इसको believe किया, but आप जो जिस तरह से आप show करते हो चीज को, that is more sustainable, goes a long way. So kudos to you and kudos to how you present and up your message देते हो, and with hard facts. It's not like just believe me what I'm saying. So I think that's important. Om Shanti. I agree 100% with Vishal Bhai. I agree Yes, with I'm sure. Vishal Bhai. Yeah. Yes, I'm sure everybody is benefiting by these classes. Thank you. It's all Baba's ways of touching, you know, so that we can all progress together. So thanks to Baba and thanks to all of you. Yeah, एक चीज और कहनी थी सौरभ भाई. Your presentations beyond all this thing about soul consciousness can be a guide to a lot of the CEOs in the corporate world, right? Where how to present a message and say very, very little on the slide that is so impactful. I think all of your presentations are like that. That is just commendable. Thank you, Vishal. I appreciate it. Om Shanti Sarabhai. Om Shanti. Prem. Very, very effective. These videos you have shown, and the reality of life we come to know from these videos. So it's a very example of consciousness is very good through these videos. तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि reality of the life we are checking. Conscious of the soul is very important. Om Shanti, Saraswati. Thank you. God bless you. Thank you. ओम शांति. आज जो प्रेजेंटेशन था कि जिस प्रकार से हम अंदर घुसते हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो राइट वे में आत्मा भी अपने अंदर में और सब बाहर से कट ऑफ, दरवाजा बंद. तो ये बहुत इफेक्टिव लग रहा था. जैसे बहुत अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ, और करते भी हैं, काफी टाइम से लोग ज्ञान में चलते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट था कि बस दरवाजा बंद, बाहर का सारा कट ऑफ में आत्मा, तो बहुत इजी जैसे लग रहा है. वो काफी इजी लग रहा है कि आप ये हर पल भी हमारा ये कॉन्शियस में रहता है, नहीं अभी मेरा दरवाजा बंद, बाहर का सारा कट ऑफ, अभी मैं अंदर इंट्रोवर्ट में आत्मा हूँ. तो ये बहुत थैंक यू सौरभ भाई, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू बाबा. सौरभ भाई, हर्ष बोल रहा हूँ. ओम शांति हर्ष भाई. Om Shanti. I'll just add on to what Vishal bhai just said, that you know how it would be so effective if companies start to include this as a mandatory exercise. क्योंकि आज मेरे कंपनी में एक ट्रेनिंग थी अनकॉन्शियस बायसनेस पे, तो वो उनका मतलब कि एजेंडा सही था. उनका कहना मतलब कि they were just trying to promote how every company should be inclusive about diversity, and diversity कहने का मतलब सिर्फ race और ये सब से नहीं, but like you have unconscious biasness towards so many things. जैसे अगर कोई किसी मोटे आदमी को मैं देख लूं तो मेरा पहले से प्रेजुडिस बना रहेगा कि ये बहुत खाता होगा, even though like he or she may be suffering from some hereditary disease or उस टाइप से कुछ भी. तो but since my mind is conditioned that way कि पहले से मतलब कि biasness, तो I mean they were trying to make sure कि ये जो biasness है उसको कैसे हम लोग unconscious biasness है उसको कैसे हम लोग ये कम कर सकते हैं. तो but it was all on at brain level. वो mind level पे वो चीज वो नहीं उनको समझ में आ रही थी, जो हमको मतलब कि इस स्टेज पे समझ में आ रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे
वो समझने का जो मिलता है वो I mean the lady who was taking on the training, I mean she's fabulous. She's been doing it in several countries. She does every year at Harvard Business School. So she's a very profound lady. But like जो भी उसका रिसर्च है, जो भी उसका नॉलेज है, वो ब्रेन लेवल पे ही है. एंड what she came to a conclusion was कि हम ये जो unconscious biasness है उसको हम change नहीं कर सकते हैं. मतलब कि because the brain is attached to the body, I mean we walk with our brain, we talk with our brain, we do everything with our brain. So वो बोल रही थी कि you can't get rid of this unconscious biasness. It will come, it will seep in some or the other form whenever you talk to somebody or make decision about some or the other thing which will eventually impact people, or if even if it is not that significant, it will impact you because you have that unconscious biasness. But वो उतना स्ट्रेच नहीं करूंगा मैं. मेरा कहने का मतलब है कि ये कॉर्पोरेट लेवल पे भी लोगों को जैसे ब्रेन पे ही जो भी सोच हो सकता है उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उतने तक ही वो बात करते हैं. बट दे डोंट गेट टू दैट माइंड लेवल, दैट सोल लेवल, क्योंकि उनका लिमिटेशन फिर वहां आ जाता है ना. आई मीन द लेडी वाज ट्राइंग टू टेल कि कैसे अपने आप को बायसनेस से बचा के रखना है, सो दैट लाइक यू डू नॉट ऑटोमेटिकली स्टार्ट जजिंग पीपल. हमको भी, हमारा भी एक ये पर्पस है ना लाइफ का कि हम किसी को जज नहीं करें, एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस तो हमारा मेन मतलब कोर प्रिंसिपल्स है ना. तो वो भी वही कह रही थी. बट आई मीन शी couldn't take it to a different level कि भाई माइंड, ये ब्रेन के बाद ब्रेन और माइंड का ये ब्रेन और माइंड का जो टैंडम है वो बहुत जरूरी है. एक साथ चलना बहुत जरूरी है. और लेकिन वो माइंड का प्रिंसिपल उनको पता ही नहीं है ना. वो तो ब्रेन लेवल पे जो भी बात करना है उनको वो करना है. तो लिमिटेशन आ जाती है. चाह रहे हैं लोग कॉर्पोरेट लेवल पे भी अच्छा करना, और ये जो भी आत्मा हमारा है वो सारा वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी एम्बाइड करना चाहते हैं. बट अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. तो जैसे विशाल भाई ने बोला कि ये कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये सारा होना चाहिए, स्पिरिचुअल लर्निंग. मतलब कि मुझे तो अब हर चीज में ये फील होने लगता है कि मतलब फिर इसका आंसर यही है. मतलब कि ये स्पिरिचुअल ही लर्निंग हर चीज का आंसर है. कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है. I mean, there is spiritual learning gives answer to everything, I guess. And like when the scope of that lady was limited, I personally had answer, पर मैं बोल नहीं सकता हूँ ना कि भाई spirituality को अंदर लेके आओ. I mean, you have to blend this your brain thoughts and blend it with the mind thought, mind, so that together they can transform the companies and the employees, and the leadership will greatly be impacted because of this. तो वो फिर बस वही शेयर करना था आपसे, और कुछ नहीं, बाकी लोग से भी. सौरभ भाई actually, so actually I told that woman when she was doing this training, I told her that like if you consider everybody as a soul, like I brought some spirituality over there actually. So I think your unconscious biasness goes away immediately, right? When you just think that this person is just a soul, and you
Like I don't know whether she agreed with me or not, but I brought up this spiritual point over there. So I attended the same training. And one thing actually I wanted to bring up here is that one time Rita and I were looking at Moini Didi's meditation. And we noticed that somehow Rita said, oh, the screen has frozen somehow. And actually it was not frozen. We thought the screen was like there was something wrong with the internet, and the screen was frozen for 5 minutes, maybe 6-7 minutes. And it was not frozen, actually. The way she meditated was really amazing. So I wish I could do that way, but we know that we can't reach up to that level. We have to work really hard. But that's like the highest level of meditation I could see. Very nice. Yes, that's true. And all our seniors, and they have practiced this soul consciousness very, very deeply. तो इसलिए जब दीदी योग में बैठते हैं तो जैसे पूरी तरह से अशरीरी हो जाते हैं, तो शरीर का भान एकदम चला जाता है. तो इसीलिए फिर she can just create and then share that vibration with all of us. Thank you. Okay, so thank you everyone, and have a good night and a good day. Om Shanti. Thank you, Saurabh Bhai. Good night. Om Shanti. Thank you, Saurabh Bhai. Om Shanti. Good night and good morning, everyone. Om Shanti. Thank you, Saurabh Bhai. Om Shanti. Thank you, Bhaiji. Thank you, Saurabh Bhai. Om Shanti. Good night. Om Shanti. Thank you, Saurabh. बेटा आपकी भी नाइट होगी, हमारी भी नाइट है. गुड नाइट जी.